Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Dolphin Headhunters, and this is a prediction video for 21st June examination of files for both academic and GT candidates. Don't skip the video, watch this till the end because this could be your roadmap for listening, reading and writing. So without wasting your time, let's begin. So module number 1, listening. Listening जैसे कि we all know is a module of 30 minutes जहाँ पे एक audio play होगी and no repeats. And listening has 4 parts. So part 1 would be easy. As expected also, part 1 में you will be getting form completion. And in part 2, you will be having map or diagram. Yes, map would be there and diagram would be there with labeling. And second question type would be match the headings. टफनेस वाइज आपका सेक्शन 2 जो होगा कुड बी अ बिट मॉडरेट फाइन. इन पार्ट 3 थोड़ी सी जो स्पीकर की बोलने की स्पीड होगी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी एज एक्सपेक्टेड ऑल्सो. एंड एमसीक्यूज होंगे, मैचिंग होंगी हेडिंग्स की, स्पीकर्स को आपने ओपिनियन से मैच करना होगा. एंड सेक्शन 3 आपका टफ होगा, राइट. सेक्शन 4 भी आपका टफ होगा. वर्ड लिमिट आपको पता ही है, एंड और अ नंबर. एंड क्वेश्चन टाइप वुड बी सेंटेंस कंप्लीशन एंड समरी कंप्लीशन. टिप फॉर लिसनिंग इज, जो आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं बिफोर द सेक्शन स्टार्ट्स, 30 सेकेंड्स प्लीज वेस्ट मत करिए. फोकस ऑन द कीवर्ड्स एज मच एज यू कैन. जितने आप आंसर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रिडिक्ट कर लीजिए बिकॉज प्रिडिक्शन इज द मेन की व्हेन यू हैव टाइम एंड व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग. So module number 2 is your reading. First we will discuss the reading for the academics. Academics जैसे कि आपको पता ही है, रीडिंग में आपके पास 3 पैसेजेस होंगे, 1, 2 and 3. टाइम गिवन वुड बी 60 मिनट्स. सो जो पैसेज 1 होगा आपका कंपैरेटिवली इजी होगा. इन टॉपिक्स जो आपके सामने हो सकते हैं फॉर रीडिंग पैसेज 1 इज हिस्ट्री, एनिमल्स और अबाउट सम इन्वेंशन, लेटेस्ट इन्वेंशन. And question type would be true, false, not given, and sentence completion as expected. पैसे थोड़ा आपका इजी रहेगा. So passage 2 topics would be scientific, education, industrial and robotics. थोड़ा सा आपका टफनेस लेवल इस पैसेज की वेरी कर सकती है. And question type would be summary completion and match the headings, which is again a bit expected. And passage 3 would be tough, actually tough because topics थोड़े toughness वाले होंगे आपके. Technical ethics, psychology and social structures. Question type multiple choice questions, yes no not given and match the headings. So tip for reading is, आपको पता है कि एकेडमिक रीडिंग पे आंसर्स जो होते हैं वो जनरली सीक्वेंस में ही होते हैं, फाइन. तो अगर आप इस टिप को यूज कर सकते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आप व्हेन इट कम्स टू योर रीडिंग. एंड प्लीज वोकैब, कुछ वर्ड्स अगर आपको ऐसे लगते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, डोंट स्टिक टू इट, मूव. किसी क्वेश्चन में आप स्टक हो रहे हैं, आपको आंसर नहीं फाइंड आउट हो रहा है, and if the answer is not presenting itself in front of you, skip the particular question and move on. Do not waste your time, as time management is the key whenever it comes to the reading. So now we will discuss the predicted question type for GT. So GT passage आपके 1, 2 and 3 होते हैं, as we all know. Time is same 60 minutes. जो आपके first 2 passages होंगे वो easy होंगे as expected. And question type for the passage 1 would be mass information and short answer questions. Topics could be related to notices, schedules and some advertisement. And for passage 2, question type would be again expected जो आपकी match headings होती हैं and sentence completion. And topic could be related to workplace policies and formal documents. And for passage 3, yes, toughness ज़्यादा हो जाएगी and this passage is generally tough and predicted भी है. जो 21st को एग्जाम होगा उसमें आपका passage ही थोड़ा tough होगा as compared to earlier 2 passages. Question type would be MCQs, yes no not given and summary completion. So GT there is a main tip, vocab. जनरली जीटी की रीडिंग में क्या होता है, जो आपके मैक्सिमम आंसर्स होते हैं वो आपके वोकैब के वर्ड के ऊपर ही फिक्स होते हैं. सो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस व्हेनेवर इट कम्स टू योर वोकैब, राइट. एंड सेकंड इज टाइम मैनेजमेंट. आपके जो पहले 2 पैसेजेस होंगे एज वी ऑल वो डिवाइडेड होते हैं आगे सब 2 पैसेजेस में, तो थोड़े 4 पहले करने होते हैं आपको, एक आपका एंड में होता है. फर्स्ट 4 इजी ही होंगे एज ऑफ नाउ एंड एंडिंग वाला थोड़ा डिफिकल्ट होगा. सो प्लीज मैनेज योर टाइम वाइजली. Now the module 3rd, that is writing. First we will discuss the writing for the academics. So academic students, expected है कि आपको एग्जाम में बार ग्राफ मिलेगा. चांसेस आर मोर फॉर बार ग्राफ एज कम्पेयर टू अ लाइन ग्राफ. एंड अगर कॉम्बिनेशन में कुछ हुआ तो इट वुड बी अ टेबल एंड अ पाई चार्ट. And chances of diagram and map are less.
but it could be there. So as of now, you can go ahead with bar graph, map, or a table in combination, right? So key for academic students is please focus more on the trends. Words like drastic increase, dramatic decrease, a steep, a stagnant, ऐसे words आपने often use करने हैं when it comes to your task one. And focus should be main on the comparisons. Try to do less repetitive words and use more synonyms. So now we will discuss general trainings task 1. So task 1 would be either a formal letter or a semi-formal letter. So whenever you're attempting a formal letter, you need to keep one thing in your mind that you have to be polite, structured and no contractions. And for semi-formal letter, you can be friendly but you have to be respectful at the same time. And what would be the content of the letter? It has to be in the sequence as I am saying: introduction, purpose, main body, ending, and the signature, right? So topics could be a complaint letter for a bank, and then you could be having a request letter or a letter to a company or a manager. So now let's move to task 2 for writing for both academics and GT. First, let's have a look at the likely topics, and the topics are technology, AI in education, remote working culture, then we have health and government responsibility and impact of advertisement. So whenever you try to attempt a writing task 2, you need to keep certain things in mind. First is try to cover one idea, one paragraph. Number 2, give a good opinion in the introduction. And number 3, try to give a conclusion from both the sides, and do not write to impress the examiner, but do write to express the clarity. And now the predicted essay type. Highly likely topic is agreement and disagreement. Chances of advantages, disadvantages, and problems and solution essay is comparatively less. And double question essay could be there, but secondary. And discussion essay of both views and opinion could or could not be there. Now the last minute tip. Do not just practice, practice, and practice blindly. Analyze your mistakes, improve them, and then practice. You need to practice from the Cambridge materials as they are always updated, and try to solve more than 2 mock tests in the real exam scenario. If you need any extra last minute help, then Dorset Headhunters is just a call away. Chandigarh's only result oriented institute, as we believe in practicing smart, not only hard. I'll see you next time. And like and subscribe the channel if you like the content, and stay tuned to us.